Today, our topic is fertilization, human fertilization. When we talk about the fertilization, that means the sperm combines with the ova. The fusion of sperm with the ova is known as fertilization. In humans, the fertilization is internal. Humans have fertilization internal because the sperms are produced by male are deposited into the vagina of female. Now, this fusion, when the sperms enter into the female reproductive system, the first thing they come to cross is the approach of sperm. What will be the approach of the sperm? When the sperm will reach to the female reproductive system, to the vagina, what will be their approach? The first point is around 3 to 3.5 ml of sperm are produced during each coitus or ejaculation. अगर इस sperm में इसका number less होगा, there are least chances that the fertilization will occur because हमें fertilization के लिए खाली एक sperm चाहिए. ओवा तो एक ही है. During menstrual cycle we can say only one ova is produced, but sperms required are 3 to 3.5 ml, or we can say that 200 to 3 million 200 to 3 million sperms are required. Why this huge number? This huge number is because when the sperms reach the female reproductive system, they have to cross many barriers. They have to come across WBCs. These WBCs will start phagocytosis. ये जो WBCs है, they will engulf these foreign bodies. ये जो sperm है, human body के female body के लिए these are foreign bodies. So just like a parasite. तो ये female body इन sperms को allow नहीं करेगी survive करने के लिए, और इसीलिए their sperm count is 3 to 3.5 ml and 200 or 300 million. The sperms will die, they will be killed, they will be phagocytosed. Now ये sperms मर जाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो इसीलिए नेचर ने रखा है 2 to 3 मिलियन. अगर ये sperm काउंट कम होगा, लाइक हमारे पास 10,000 15, हमें तो चाहे एक ही, fertilization will not occur because the sperms will be killed. Now, इस semen में जब हम semen की बात करते हैं, when we talk about the semen, or we can say seminal fluid, इस seminal fluid में एक केमिकल होता है जिस केमिकल का नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स. ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, these prostaglandins, they are present in male seminal fluid. इनका काम क्या होता है? First, ये जो seminal fluid है, they help in contraction of female reproductive system. These prostaglandins, they help in contraction of female reproductive system so that the sperms will move ahead. The sperms will move ahead. Sperms आगे जाएंगे. Contraction of female reproductive system, activation of sperms. ये sperm को एक्टिवेट करने में भी अच्छा खासा रोल अदा करते हैं और sperms आगे चले जाते हैं. लेकिन there are many barriers again which stop the sperms to go ahead. Like जो thick endometrium है, the thick endometrium which was formed during the normal menstrual cycle, that is around 0.5 mm micrometer. ये जो thick
endometrium बना है, this will not allow sperm again to move ahead. Another barrier is the acidic pH. This female reproductive system has acidic pH. जो sperm या seminal fluid है, that is alkaline in nature because of the presence of fluid from prostate gland, fluid from seminal vesicle. Now, अगर ये acidic pH रहेगा, again the sperms will die. अगर हमें sperms को बचाना है, if we want to survive the sperms, then this acidic pH has to be changed. यहाँ पर जो seminal vesicle का जो 3 to 3.5 ml fluid है, that is also used to change the acidic medium to alkaline medium. Now, out of these thousands of sperms, only 10 to 100 sperms will reach to the ova, and out at the speed of 1 to 1.4 mm per minute. This is the speed of the sperm in female reproductive system. यहाँ पर फीमेल के पास फ्लैजिला है, flagellum. This flagellum helps in movement of sperm inside the female reproductive system. Now, sperm will try to approach towards the ova. This is known as capacitation. Capacitation means sperm will move towards the ova. Sperm will move towards the ova, known as capacitation. लेकिन जो ही ये मूव कर रहा है, उसी दौरान वहां पर सबसे पहले इसको क्या करना है? अगर ये स्पर्म है, स्पर्म के इस एंटीरियर साइड पर होते हैं, इस एंटीरियर हेड में होते हैं स्टीरोल्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स. Sterols and glycoproteins are present in sperm head. उससे क्या होगा? ये जो sperm head है, sperm head जो है, इसके पास स्टीरोल है और glycoproteins. These are absorbed by female reproductive system. इससे क्या फायदा आएगा? इससे ये फायदा आएगा, ये जो head है, it will become permeable. जब हेड परमिएबल बनेगा, इससे क्या होगा? यहां पर कैल्शियम आयन्स होते हैं इस एनवायरनमेंट में, यहां फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. पहला पॉइंट, हेड के अंदर स्टीरोल्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स है, दे विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैल्शियम है. This calcium will enter through the head. इससे क्या होगा? It will become porous, जिसको हम कहते हैं permeability. It will increase the permeability. When it will increase the permeability, it will become porous. उससे क्या होगा? इसके अंदर जो फ्लूइड है, that will come out, जिसको हम कहते हैं sperm license. यानी कि sperm license are released. Sperm will move towards the ova, approach of sperm. Sperm के पास sterols and glycoproteins, they will come out. Calcium will enter. It will become porous. Now, sperm head से sperm license will be released. उससे क्या होगा? Sperm license contain many types of enzymes. This reaction is known as capacitation. अब capacitation means approach of sperm towards the ova. Sterols and glycoproteins are released. Calcium will enter.
sperm license will be released. Now, what are the sperm license? Sperm license are the enzymes which are required to fuse nuclei or sperm with the ova. It's not an easy task because there are millions of species in the world. Then any species can come, any male and with any female. No, it is species specific. The first most important point is species specific. But reproduction is not species specific. Intercourse is not species specific. But fertilization, fusion of sperm with ova is species specific. What is that specificity? Come across, we will see it. एग के पास फर्टिलाइजन होता है, एग के पास फर्टिलाइजन होता है और स्पर्म के पास एंटी फर्टिलाइजन होता है. लिंक ताले अपनी ही चाबी से खुलते हैं. यहां पर फर्टिलाइजन के पास, एग के पास और एंटी फर्टिलाइजन स्पर्म के पास. ये फर्टिलाइजन एग और एंटी फर्टिलाइजन स्पर्म, इनके जो दोनों ये केमिकल्स है, एंजाइम्स है, सबसे पहले दे विल रिकॉग्नाइज विद ईच अदर. When they recognize with each other, then the second reaction will occur. Second point will occur. वो इसका मतलब फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन स्पीशीज स्पेसिफिसिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. It is a natural gift. Otherwise, humans might have crossed with the dogs, bitches, etc. Now, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? Sperm should be mature. स्पीशीज स्पेसिफिक, जिसको हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड यूनिकनेस. एवरी स्पर्म, एवरी इंडिविजुअल, एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी स्पीशीज हैज a specific sperm. Now, only 10 to 100 sperms will reach to the ova. 10 to 100 sperm will reach to the ova. And यहां पर क्या होते हैं इनके पास? अभी lytic enzymes. There are 3 lytic enzymes. Now, sperm and ova, they have come across, टच किया है, फर्टिलाइजर और एंटी फर्टिलाइजर ने देखा है. अब जब ये क्लियर हो गया बाहर से ही, गेट पर ही क्लियर, वहां ये अपना स्पर्म है, अपनी स्पीशीज का है. नाउ, पहला जो बाहर वाली लेयर है, कोरोना रेडिएटा, ओवा की कोरोना रेडिएटा, उसको डिजॉल्व करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. इसको कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, द आउटर लेयर ऑफ ओवा will be dissolved by corona penetrating enzymes. Now, hyaluronidase, दूसरा एंजाइम जो है hyaluronidase. Hyaluronidase एंजाइम ये हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व करेगा. हाइलुरोनिक एसिड को क्या है? जो पेनिट्रेटिंग कोरोना पेनिट्रेटिंग सेल्स है, इस तरह इनके बीच में होता है हाइलुरोनिक एसिड. हाइलुरोनिक एसिड, उस हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करता है hyaluronidase enzyme. Now, the third is acrosin. Acrosin will digest zona pellucida. Acrosin will digest zona pellucida. Now, the 3 layers, we cannot say 3 layers. Outer layer, corona penetrating enzymes, corona penetrating layer dissolved by corona penetrating enzymes. उनके बीच में जो था सीमेंट लाइक, हम कहेंगे हाइलुरोनिक एसिड, उसको हाइलुरोनिडेज ने डाइजेस्ट किया. एक्रोसिन ने जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट किया. इसके बाद अब एक रिसेप्शन कोन या फर्टिलाइजेशन कोन बनेगा, जिस ये कोन जो है फर्टिलाइजेशन कोन, जिस कोन के थ्रू द स्पर्म न्यूक्लियस विल एंटर. नाउ, इसके बाद है एग मेम्ब्रेन. एग मेम्ब्रेन, एक जो एग का मेम्ब्रेन है लास्ट वाला, ये इट विल फॉर्म अ कोन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं कॉनिकल स्ट्रक्चर. सो डेट ये जो न्यूक्लियस स्पर्म का है, ये न्यूक्लियस ओवा का है,
दे विल फ्यूज। लेकिन फ्यूज होने से पहले अगर आपको याद होगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल जो है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग आता है ऑन 14, 15 and 16th डे, दैट इज एट सेकेंडरी oocyte, दैट इज सेकेंडरी oocyte। इट इज सेकेंडरी oocyte, इसका मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है। जब स्पर्म आएगा, स्पर्म के पास होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल is present in the neck of sperm। और जब ये आएगा, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इस सेकेंडरी oocyte को, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आएगा, इसको अंदर जाएगा और ये डिवीजन कंप्लीट होगा। डिवीजन विल बी कंप्लीट। यहाँ क्या बनेगा, एक oocyte बनेगा और एक पोलर न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियस इसका तो कोई काम है नहीं, अभी बाद में देखेंगे इसका काम क्या है। और ये बनेगा oocyte, कंप्लीट oocyte। लेकिन इसके लिए स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होना जरूरी है। अब प्रॉक्सिमल डिवीजन भी कंप्लीट है, क्रॉस बाकी जो बाउंड्रीज है उनको भी कवर किया है। अब खाली फ्यूजन। अब जो स्पर्म के पास, ये जो स्पर्म है, अब ये न्यूक्लियस है, ये ऊपर से कट हुआ है। अब ये न्यूक्लियर फर्टिलाइजेशन कोन भी बना है, इसके साथ कोन भी बना है। नाउ दिस न्यूक्लियस विल एंटर इनटू, लेकिन कहां से, ऑन एनिमल पोल। एनिमल पोल इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जहां से न्यूक्लियस होगा। नाउ मियोसिस सेकंड विल कंप्लीट। इसके बाद मेटाफेज में जो ये जो रुका था मियोसिस के मेटाफेज में, दे विल बी डीएक्टिवेटेड। नाउ एनाफेज विल बी एक्टिवेटेड, एनाफेज आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज कॉर्टिकल रिएक्शन। Cortical reaction means cortex and membrane, cortex of the ova, oocyte, इसके पास कॉर्टिकस होता है, उसके बाद कॉर्टिकस ग्रेन्यूल्स होते हैं। वही कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनाते हैं पेरीवाइटलिन स्पेस। पेरीवाइटलिन स्पेस इज द स्पेस formed by cortical granules of the membrane, egg membrane, oocyte membrane। फर्टिलाइजेशन कोन बन गया है, फर्टिलाइजेशन कोन बन गया है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ने बनाया है। न्यूक्लियस अब रेडी है मेल का, स्पर्म का टू एंटर, क्योंकि उसका बाहर वाला कवर उठा है। स्पर्म विल एंटर इनटू द oocyte, इनटू द न्यूक्लियस ऑफ oocyte एंड द फ्यूजन विल ऑकर। जब फ्यूजन हो जाएगा, दिस इज नोन एज ज़ाइगोट। ज़ाइगोट विल बी फॉर्म्ड। ये कहां पर बनेगा, इन फैलोपियन ट्यूब। Now, fertilization is almost complete. Zygote has formed in the fallopian tube of female. Zygote अब क्या करेगा, ये आगे जाके फर्दर डिवीजन और कॉम्प्लेक्स कहाँ जाएगा वो हम देखेंगे।